आपण को ओडिशा स्टूडेंट्स हब यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम पॉलिटिकल साइंस रो इम्पोर्टाट एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा जोटा कि आगक आसुवा ओटीटी एसएसबी टीजीटी आर्ट्स एवं असिस्टेंट टीचर निहाती हेल्पफुल हम। तेज चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। प्रथम प्रश्न कौन अच्छी देखा। प्रथम प्रश्न अच्छी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट लिखी दिखाई देखु। ऑप्शन ए रे अच्छी देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। 2 रे अच्छी सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। 3 रे अच्छी ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डेप्रिव ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। पाखे देछि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबव इज योर करेक्ट। एथि मध्यरु कोटा सठिक देखंतु। ऑप्शन ए 2 1 3 1 3 और डी रही 2 and 3। तेणु सठिक आंसर कौन हम ए भितर सठिक आंसर हम ऑप्शन ए हम 1 ओनली। कौन अच्छी 1 रे देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। तेणु ए पाखे ऑप्शन ए हम यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अच्छी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। देखो ये प्रश्नटा आईएएस 2021 परीक्षा आसाला दिखाई अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। एपाखे ऑप्शन अच्छी टू द राइट टू इक्वालिटी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द राइट टू फ्रीडम, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। कौन हम यार सठिक उत्तर ना यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तेणु ऑप्शन बी है यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। संपत्ति अधिकार कौन स्थिति अच्छी। ए पाख ऑप्शन अच्छी लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नेदर फंडामेंटल राइट नॉट लीगल राइट। यहाँ आईएएस 2021 देखो यार सठिक उत्तर कौन हम ना यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। तेणु लीगल राइट जेकोसी पर्सन के लागू हो पारे। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अच्छी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। भारत रत्न और पद्म अवार्ड के कोई एमध्य कौ स्टेटमेंट ठीक अच्छे देखो। भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स और टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2 अच्छी पद्म अवार्ड्स व्हिच वेर इंस्टीट्यूट in the year 1954 were suspended only once. 3rd अच्छी the number of Bharat Ratna award is restricted to a maximum of 5 in a particular years. एथि मध्यरु कोटा सठिक उत्तर देखंतु कौन हम सठिक उत्तर ना एथि मध्यरु ऑप्शन डी रे कौन अच्छी 1 2 3। एथि मध्यरु समस्त दिया जाइथिबा समस्त ऑप्शन ठीक अच्छी माने 1 2 3 जोटा अच्छी ऊपर 1 भी ठीक हम 2 भी ठीक हम और 3 भी ठीक हम। तेणु 3टा जाक ठीक हम। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अच्छी राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तेणु राइट टू प्राइवेसी जो राइट अच्छी कोटे आर्टिकल अच्छी यहाँ आईएएस आसाला 2021 देखो। ऑप्शन अच्छी आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29। कौटा सठिक हम ना आर्टिकल 21 ऑप्शन सी हम सठिक उत्तर। कौन ना आर्टिकल 21 रे राइट टू प्राइवेसी विषय कहुई। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अच्छी ए लेजिस्लेशन व्हिच कन्फर्स ऑन द एक्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन अच्छी आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44। कौन हम ना यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए आर्टिकल 14। तेणु ऑप्शन ए आर्टिकल 14 हम यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अच्छी हु एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज द नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौटा एथि मध्यरु किए डिस्क्राइब करथिले डायरेक्टिव प्रिंसिपल गोटे महत्व माने डीपीएसपी जोटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गोटे नोवेल फीचर बोली किए कहते जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एसएन मुखर्जी, बीआर अम्बेडकर। कौटा सठिक हम ना एथि ऑप्शन डी बीआर अम्बेडकर।
गोटे नोबेल फीचर बोली कही तेणु डी हम यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविड्स फॉर द कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इंडिया। तेणु एमध्य कौ आर्टिकल इक्वालिटी उभय पुरुष और नारी को कहुई। ऑप्शन अच्छी आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट और डी अच्छे आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौटा सठिक हम ना एमध्य ऑप्शन ए जोटा अच्छी आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तेणु आर्टिकल 14 और 15 उभय समानतार अधिकार अच्छी से ऑप्शन ए हम सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन जस्टिसेबल राइट्स। कौटा भितर नॉन जस्टिसेबल राइट अच्छी राइट टू एडुक्वेट लाइवलीहुड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ एक्यूज्ड, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौटा सठिक हम ना एमध्य सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए हम राइट टू एडुक्वेट लाइवलीहुड। तेणु ऑप्शन ए हम यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अच्छी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन guarantee freedom of speech and expression, but the freedom is subject to certain reasonable restriction is imposed by the state. These restriction may related to which of the following? Option is defamation, decency of morality, incitement of an offense. कौटा हम 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 3। कौटा ये सठिक उत्तर कौन हम ना एमध्य ऑप्शन डी 1 2 3 जो डिफेमेशन, डिसेसी ऑफ मोरालिटी एंड इनसाइटमेंट एंड ऑफेंस। तेणु उभय सबू गुड़ाक सठिक हम। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एमध्य कौटा कहुई जोटा कि आम गणतंत्र विषय भूल अच्छी सठिक नुहे अर्थ। ऑप्शन इज द कॉन्स्टिट्यूशन Amendment Act has inserted the right to education under Article 21. Article 22 talks about preventive detention. Right to constitutional remedy is in part of Part 2 of the Constitution. Writ jurisdiction of high courts is wider than the Supreme Court of India. एथिमे कोटा ठीक है ना ऑप्शन ए the Constitution Amendment Act has inserted the right to education under Article 21. परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अच्छी इन रिलेशन ऑफ टू द फंडामेंटल ड्यूटीज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर नॉट ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड abjure violence or fundamental duties. They are not enforceable through writs. They may not be used for determining constitutionality of law. एथिमध्यरु कोटा सठिक मना एथिमध्यरु ऑप्शन डी दे मे नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। तेणु ऑप्शन डी हो यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जावा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976। ऑप्शन अच्छी द स्टेट शैल मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोविजन के फॉर अर्ली चाइल्डहुड। एथिमध्यरु कोटा सठिक हो ना एथिमध्यरु ऑप्शन बी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एटा सब सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एक्सप्रेशन टू द फंडामेंटल राइट्स enumerated in Article 14 and Article 19। कौन सठिक हम ऑप्शन अच्छी आर्टिकल 31A and Article 31C, Article 31B and Article 31D, Article 12 and Article 13, Article 16 and Article 17। एथिमध्यरु सठिक उत्तर कौन हम ना एथिमध्यरु ऑप्शन ए हम यार सठिक उत्तर। ऑप्शन ए आर्टिकल 31A and Article 31C हम सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इश्यू ऑफ ए रिट कोरंट। कौटा आवश्यक नहीं कोरंट देखो ऑप्शन सी द ऑफिस मस्ट बी ए पब्लिक ऑफिस, द ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड बाय द स्टैच्यू और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, द ऑफिस मस्ट नॉट बी ए सब्सटेंटिव वन, देयर हैज बीन ए contravention of the constitution or a statute in appropriating such a person to the at office। एथिमध्यरु को जिनिसटा सठिक ना एथिमध्यरु ऑप्शन सी द ऑफिस मस्ट नॉट बी ए सब्सटेंटिव वन। तेणु ऑप्शन सी है यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हाट इज द ग्राउंड ऑन व्हिच द सुप्रीम कोर्ट
can refuse relief under Article 32. Option C, the aggrieved person can get remedy from another court, that disputed facts have to be investigated, that not fundamental rights has been infringed, that the petitioner has not asked for the proper writ applicable to his her case. एथि कोड़ा सठिक ना एथि ऑप्शन सी दैट नो फंडामेंटल राइट्स हैज बीन इनफ्राइंज तेणु ऑप्शन सी यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अछि overseas Indian can exercise franchises in an election to the Lok Sabha under which of the following condition? कोड़ा ठीक हो they must be citizen of India, their names must figure in the electoral roll, they must be present in India to vote. एथि मध्य कोना सठिक ना एथि मध्य ऑप्शन ए मध्य सबू गुड़ाक ठीक हे ए बी टी तेणु एथि मध्य ए हे सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अछि with reference to the provisions contained in part IV of the Constitution of India, which of the following statements is your correct? Option A, they shall be enforceable by courts, they shall not be enforceable by any court, the principle laid down to in this part or to influence the making of law by the state. कोड़ा ठीक हे एथि मध्य डी जोटा डी ठीक हे 2 and 3 they shall not be enforceable by any court, the principle laid down in this part or into influence to the making of law by the state. तेणु ऑप्शन 2 3 डी रे अछि जोटा 2 and 3 सठिक हेबा। परवर्ती प्रश्न अछि which article of the Constitution of India safeguard one right to marry to the person of one choice? तेणु निज हिसाब रे कोनोसी जिनिस को हमें कोनोसी जहा को भी चाहेबा विवाह करि परिबा कोटा रे अछि को आर्टिकल ऑप्शन अछि आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 आर्टिकल 25 आर्टिकल 29 एथि मध्य कोन अछि ना एथि मध्य सठिक उत्तर कोन हबो एथि मध्य सठिक उत्तर हबो एथि मध्य सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न अछि in which of the following provision for the protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife are found in the Constitution of India? कोठी अछि only in the right principle of state policy, only in the fundamental duties, both A and B, none of the कोन हो सठिक उत्तर ना ऑप्शन सी both A and B A एवं B वो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अछि which of the following article was inserted by the 42 Constitution Amendment to provide for participation of workers in management? Option C article 30A, article 39A, article 45, article 43A कोड़ा ठीक बना ऑप्शन डी जोटा अछि 43A वो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न अछि which of the following is not correctly matched? कोटा correctly match होनी harbors croppers to have the body of mandamus we command provision to be certified warrant by what authority? एथि मध्य कोड़ा सठिक उत्तर ना ऑप्शन सी provision to be certified अब सठिक उत्तर। सठिक उत्तर माने एटा भूल अछि सेति में प्रश्न हिसाब एटा ऑप्शन सी अब सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न अछि राइट टू वीटो एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए कोड़ा कोना राइट टू वीटो एंड इलेक्टेड इंडिया इज ए कोड़ा ठीक है ऑप्शन अछि फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट एथि मध्य सठिक उत्तर कोन होना एथि मध्य ऑप्शन डी लीगल राइट हेबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न अछि द 86th amendment of the Constitution of India altered a directive principle of the Constitution to provide for early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. The state to provide free legal aid, encourage village panchayat prohibiting intoxicant drinks, drugs injurious to health. एथि थ्रू कोटा ठीक बना एथि ऑप्शन ए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 years. परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न अछि which of the following is not provided for under the directive principle of state policy? Option C right to work, to education and to public assistance in certain cases, uniform civil code for citizens, separation of judiciary from executive, participation of workers in the management of local self government. एथि कोडा ठीक होना एथि मध्य ऑप्शन डी participation of workers in the management of local self government हर सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जिबा।
परवर्ती प्रश्न अछि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल idea which inspire our national struggle for freedom is a provision of which one of the following of the constitution of India एथिमध्ये कोडा ठीक बना करेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स प्रीम्बल एथिमध्ये कोडा ठीक बना एथिमध्ये ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज हेबो यार सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न को जिबा which one of the following is not enumerated in the constitution of India as a fundamental duties of citizens of India option अछि to safeguard public property to protect and improve the natural environment to develop the scientific temper and spirit of inquiry to promote international peace and security एथि मध्यरु सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी to promote international peace and security परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न अछि which one of the following condition laid down in the constitution of India for the issue of a writ of quorum is not correct option C the office must be public and it must be created by the statute the office must be a substantive one there has been a contravention of the constitution or a statute in appointing such person to that office the appointment is in tune with a statutory provision एथि मध्यरु सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी the appointment in the tune with statutory provision नो ऑप्शन डी है सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न अछि which one of the following article of the constitution of India states that no citizen can be denied the use of wells tanks and bathing ghat maintained out of the state fund ऑप्शन अछि आर्टिकल 14 15 16 17 एथि में सठिक उत्तर हबो ऑप्शन बी आर्टिकल 15 हबो यार सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न अछि आर्टिकल 46 of the constitution of India refers to the promotion of education and economic interest of option C religious minority scheduled caste scheduled tribe and other weaker section displaced person from large irrigation project the economically deprived एथि मध्ये सठिक उत्तर कोन होना एथि मध्ये सठिक उत्तर हबो ऑप्शन बी scheduled caste and scheduled tribes or other weaker section ऑप्शन बी हबो यार सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न अछि Article 21 of the Indian Constitution secures option C right to life only right to personal life liberty only right to liberty and privacy right to life personal liberty and right to privacy ओडा ठीक हबो ना आर्टिकल 21 रे जोटा अछि आर्टिकल 31 रो ऑप्शन हबो ऑप्शन डी राइट टू लाइफ पर्सन लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी देन आर्टिकल 21 रे कोन अछि ना निजर जीवन जीवार अधिकार अछि स्वाधीनतार अधिकार अछि एवं निजर जो पर्सनल प्राइवेसी को प्राइवेसी रो अधिकार अछि परवर्ती प्रश्न अछि which one of the following concern has found a place in both fundamental duties and protective principle of state policy option अछि safeguard of public property protection and improvement of environment forest and wildlife respect of the rich heritage of our composite culture promotion of cooperative society एथि कोडा ठीक बना एथि मध्यरु ऑप्शन बी जोटा अछि protection and improvement of environment forest and wildlife सनो ऑप्शन बी है सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न अछि which one of the following is not a part of the society principle of state policy एथि मध्ये कोटा डीपीएसपी रो पार्ट नु है ऑप्शन सी यूनिफॉर्म सिविक कोड फॉर ऑल सिटीजन सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एक्जीक्यूटिव ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमैनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ इनक्वालिटी रिफॉर्म एथि मध्ये कोटा डीपीएसपी पार्ट नु ना एथि मध्ये सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमैनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ इनक्वालिटी एंड रिफॉर्म परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न अछि which one of the following is not a part of the directive principle of state policy as enshrined in the constitution of India यार सठिक उत्तर हबो कोन ना एथि मध्ये सठिक उत्तर हबो ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ तेन ऑप्शन सी सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न को जिबा परवर्ती प्रश्न अछि which of the following are included in the directive principle of state policy in the constitution of India option C uniform civil code for the citizen separation of judiciary from executive protection of monument of national importance तेन एथि मध्ये सठिक उत्तर कोन ना एथि मध्ये सठिक उत्तर हबो ऑप्शन डी रे जोटा अछि 1 2 3 uniform civil code of citizen separation of judiciary from executive protection of monuments of national importance तेन एटा सब ठीक हबो परवर्ती प्रश्न को जिबा
परवर्ती प्रश्न अछि अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दीज आर enshrined in part 3 of constitution human rights transcendental rights part of basic structure of the constitution एथि सঠিक उत्तर कोन ना ऑप्शन डी पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द constitution तेनो ऑप्शन डी हेबा सঠিक उत्तर परवर्ती प्रश्न को जवा परवर्ती प्रश्न अछि वन ऑफ द इम्प्लिकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द ऑप्शंस ऑफ कोन सঠিक उत्तर प्रिविलेजेस रेस्ट्रिक्शंस कंपटीशन आइडियोलॉजी यार सঠিक उत्तर हेबो ऑप्शन ए प्रिविलेजेस हेबो यार सঠিक उत्तर ऑप्शन ए हेबो सঠিक उत्तर परवर्ती प्रश्न को जवा परवर्ती प्रश्न अछि which one of the following statement is correct option अछि right or claims of the state against the citizen right or privileges which are incorporated in the constitution of a state right or the claims of the citizen against the state right or privilege of a few citizens against the many यार सঠিक उत्तर कोन होबो ना यार सঠিक उत्तर होबो ऑप्शन सी right to or claim of the citizen against the state ऑप्शन सी बा सঠিक उत्तर परवर्ती प्रश्न जो which of the following statement is your correct option अछि with reference to the constitution of India the directive principle of state policy constitution limitation upon option C legislative function executive function यार सঠিक उत्तर होबो ऑप्शन डी neither one nor two तेनो एथि मधुर कोटा ठीक हेबनी तेनो ऑप्शन डी बार सঠিक उत्तर परवर्ती प्रश्न को जेबा परवर्ती प्रश्न अछि which of the following statement is correct truly fundamental duties of an Indian citizen एथि कोटा fundamental duties true क्वाइ छि fundamental duty उपरे ऑप्शन सी a legislative process has been provided to enforce these duties they are corrective to legal duties तेनो कोटा ठीक हेबो only one only two both one two neither one nor two कोटा ठीक हेबो ना एथि मधुर ऑप्शन डी जोटा होछि neither one or not two तेनो एटा मधुर कोटा मध्य ठीक हेबनी ऑप्शन डी हेबर सঠিक तेनु एटा सब फेल अछि तेनु ऑप्शन डी हेबर सঠিक उत्तर परवर्ती प्रश्न को जवा परवर्ती प्रश्न अछि द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अछि द प्रीम्बुल द फंडामेंटल राइट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द फंडामेंटल ड्यूटीज एथि मध्य सঠিक उत्तर हेबो ऑप्शन ए द प्रीम्बुल तेनु ऑप्शन ए हेबर सঠিक उत्तर परवर्ती प्रश्न अछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विदिन the preview of article 21 of the constitution option C medical aid to injured by a doctor sexual harassment of women at workplace pollution of the equality of water capital punishment एथि मध्य सঠিक उत्तर कोन होबना एथि मध्य ऑप्शन डी कैपिटल पनिशमेंट हेबो यार सঠিक उत्तर परवर्ती प्रश्न को जिबा which of the following case in the Supreme Court of India dealt with the issue of criminal lawyer among the backward classes रे criminal lawyer लागू हो पाई कोटा दे अछि को कोर्ट क्वेश्चन दिना ऑप्शन सी केएम नन्नावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मधु लिमाई वर्सेस भेदमूर्ति सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब यार सঠিक उत्तर कोन होबो ना यार सঠিक उत्तर होबो ऑप्शन बी इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तेन ऑप्शन बी होबार सঠিक उत्तर परवर्ती एवं सेटो प्रश्न को जिबा which one of the following judgment declare that the parliament has no power to amend any of provision of part 3 of the constitution of India ऑप्शन सी केशवनाथ भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एथि मध्य दुईटा मध्य कोटा ठीक हेबना ऑप्शन बी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब देन ऑप्शन बी हेबो यार सঠিक उत्तर तेन ऑप्शन बी हेबो सঠিक उत्तर आज आम एटा इंपोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस रो एमसीक्यू प्रैक्टिस करा निहाती यह आपण मानकु हेल्प हेइथिबो बोली आशा तेबे आम चैनल को जदी प्रथम थर पय आछंती तेबे निहाती सब्सक्राइब करनियंतु एवं वीडियो जदी भलो हिची तेबे निहाती निज सांग मानक सह शेयर करंतु एवं आगु देखिबे भलो भलो सब वीडियो आसीबो जोटा कि आगु आसीथिबा समस्त शिक्षक एग्जाम पय बहुत हेल्पफुल हेबो धन्यवाद।